इंटरनेट वर्क करता है। तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट का हम लोग डेफिनेशंस दे सकते हैं कि इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क। ये ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें कि सारी दुनिया अक्रॉस द वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्टेड है, ताकि वो अपने इंफॉर्मेशन को क्या कर पाए, एक्सचेंज कर पाए, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को दे पाए, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से शेयर कर पाए। तो दो तीन पॉइंट्स ऐसे हैं कि इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क एंड कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ पीपल। दूसरा कह सकते हैं इंटरनेट इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क, इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल नेटवर्क। थर्ड कह सकते हैं कि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। और फोर्थ कह सकते हैं इंटरनेट इज एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये चार पांच पॉइंट अगर आप याद रखते हो तो देन इंटरनेट का डेफिनेशन आप बेस्ट दे दिए कि इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क दैट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड। Internet is an international network. Internet is a network of networks. Internet is a ocean of information. तो ये इंटरनेट का बेस्ट डेफिनेशन हो गया। आज कल सबसे अगर फास्ट मीडियम है ताकि हम अपने डेटा और इंफॉर्मेशन को सेंड कर पाए या एक्सचेंज कर पाए इंफॉर्मेशंस को, तो वो एक ही चीज है, सबसे फास्टेस्ट मीडियम जो हमारे पास है वो है क्या? इंटरनेट ही है। चाहे मेल करना हो, चाहे व्हाट्सएप करना हो, चाहे टेलीग्राम करना हो, बहुत सारे चीजें, मैसेजेस सेंड करने हो, तो ये सारी चीजें के लिए इंटरनेट है। अब होता क्या है कि इंटरनेट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसके ड्राइवर्स का। तो उसका ड्राइवर का नाम है टीसीपी आईपी। नोट डाउन हियर, टीसीपी आईपी। And what is TCP and IP? It's very important protocol suite for internet. Then TCP means transmission control protocol and IP means internet protocol. Then here is question is what is TCP and what is IP? TCP basically a type of protocol. TCP IP both in the aggregated form. TCP IP is a protocol suite, but under the TCP IP there are various type of protocols used for exchanging your information on the internet. So TCP means transmission control protocol. Here basic work of TCP is to control the transmission, and IP means internet protocol. Here the work of IP is to uh, provide the destination address of your message. So anybody any doubt, then raise your hand. Any doubt? किसी को कोई डाउट हो तो अपना हैंड रेज करेगा या चैट पे भी लिख सकता है। चैट अलाउड है, हैंड रेज करना अलाउड है। इवन आप लोग कोई और अगर डाउट नहीं है तो नो लिख सकते हैं चैट पे। ओके, तो नेक्स्ट ये टीसीपी आईपी के मीन्स आप लोग समझ गए हैं कि प्रोटोकॉल सूट है। अब आगे हम लोग करते हैं व्हाई इज द इंटरनेट कॉल्ड नेटवर्क। देखिए नेटवर्क इसको क्यों कहा जाता है? Because it connecting computers and servers across the world by using different type of devices like routers, switches, telephone lines and other communication devices and channels। मतलब नेटवर्क इसलिए है क्योंकि सर्वर से भी कनेक्ट करता है, मिलियंस ऑफ दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करता है बाय यूजिंग। बिना डिवाइसेस के तो कोई काम नहीं हो सकता है, तो इसमें डिवाइसेस राउटर लगे होते हैं, स्विचेस लगा होता है, टेलीफोन लाइंस की मदद करता है और बहुत सारे अनदर कम्युनिकेशन चैनल होता है। तो
हम कह सकते हैं फिजिकल मीडियम भी होता है। फिजिकल मीडियम मतलब जैसे कि वायर्स। वायर्स हमारा फिजिकल मीडियम, फाइबर ऑप्टिक केबल्स हमारा है, टीवी केबल्स है, ये सारे के सारे फिजिकल मीडियम है। और साथ साथ में वायरलेस मीडियम भी है। और वायरलेस मीडियम में क्या है, 3G है, 4G है, वाईफाई है, सारे चीज़ों से तो इंटरनेट एक्सेस हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जब हम नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होता है, तो क्या होता है कि हम सबसे इम्पोर्टेंट काम मेरा क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह भेजना। और ये इम्पोर्टेंट काम दो मीडियम से होता है, गाइडेड मीडियम एंड अनगाइडेड मीडियम। Then what is a guided medium? There is a physical communication between two computers. Whenever you put the wire from one computer to two computer, then it is called the guided medium. And whenever you use Wi-Fi or a wireless mediums to send or exchange your information, that is called unguided medium. So the unguided mediums you have to use 3G, 4G, and Wi-Fi, and Bluetooth and infrared signals etc. to exchange your informations. But in the guided medium, you have to use different type of routers, which is telephone lines and physical cables like coaxial cable, twisted pair cables, and optical fiber cables, etc. So it is a very important question that what is the difference between guided and unguided medium. So note down this question. And next one is internet, and what is the basic difference between the world wide web and the internet? What is the basic difference between world wide web and internet? 1 minute. So there is a differentiation, various differentiation, and a deeply differentiation between the World Wide Web and Internet, because you have many people think that the World Wide Web and the Internet is the same medium, but not. It is different. World Wide Web is the collection of different documents which are linked to each other. And whenever you click on one link, then it goes to the another pages. That is the basic meaning of World Wide Web. It is a collect World Wide Web is a collection of links, collection of information, collection of document, collection of multimedia, collection of images, picture, audios, and videos. That is called the World Wide Web. But you think what is internet? So internet is a medium. Internet is just a medium which are act as a medium to transmit the information from one computer to another computer. So there is a very little difference between the World Wide Web and Internet. And this is also an important question: what is the difference between www and Internet? So you note down here and take a screenshot. Internet is the different from the World Wide Web, as the World Wide Web is a network of computer and server created by connecting them enough to the Internet. So the Internet is a backbone of web, as it the technical infrastructures to establish WWW act as a medium to transmit information from one computer to another computer, and it uses browsers to display the information on the client, which is fetched from the web server. So the basic thing is that World Wide Web is the collection of multimedia files, and the Internet is a medium through which we send our multimedia file from one computer to another computer. So any doubt, please raise your hand or write down in chat. So there we have to I provide you a task. Firstly, your study material, that is here, and the study material is that you have to
done your job, and you have to choose the correct answer whenever any in any question you have to not solve, then please discuss on the next class. And here is the HTML question is I hope 26, and another questions is 1 2 and 25, यानी कि 1 से 25 तक आपका मतलब फंडामेंटल टाइप क्वेश्चंस होंगे, और 26 आपके एचटीएमएल के क्वेश्चंस होंगे। तो इस स्टडी मटेरियल्स को आप लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टीसीपी आईपी सूट क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय टीसीपी आईपी सूट, explain internet, and what is the difference between guided and unguided medium. And the next question is what is the difference between internet and www। तो आई होप कि सब लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अमीषा कुमारी, क्या आप स्पीकर ऑन करके बोले, क्या प्रॉब्लम है आपको? अमीषा कुमारी स्पीकर ऑन करें, प्रॉब्लम बताएं। प्रॉब्लम बताइए अमीषा कुमारी। सर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नो सर आपने लिखा है, इस वजह से मुझे लगा। ठीक है, तो अगला मुझे लगता है कि लिंक आपका विद इन द 3 to 4 मिनट्स नेक्स्ट क्लास का लिंक आ जाएगा। और आप लोग क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस मेरे अलग से सब्जेक्टिव टाइप लिख लिए होंगे। अगर सब्जेक्टिव नहीं लिखे होंगे तो पूछ लीजिए मुझसे, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं फिर से रिपीट कर दूंगा। और दूसरा, आप स्टडी मटेरियल मैंने जो आपको दिया है वो स्टडी मटेरियल कर लेना है, यानी कि पूरा एमसीक्यू पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो आप लोग इसको कर लेंगे। 4 क्वेश्चंस में मैंने 4 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन दिया था व्हाट इज टीसीपी आईपी सूट, सेकंड क्वेश्चन दिया था व्हाट इज इंटरनेट, थर्ड क्वेश्चन था व्हाट इज गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडियम, एंड फोर्थ क्वेश्चन था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब सिस्टम। ये 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो गए, और बाकी स्टडी मटेरियल में मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया। सो आप लोग इन सारी चीज़ों को कम्प्लीटली करेंगे तो फाइनल एग्जामिनेशन में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर नेक्स्ट क्लास में मैं और स्टडी मटेरियल लेके आ रहा हूँ एमसीक्यू के साथ, तो वो भी आपको करने हैं।